because that is more of a dual agonist. सर साइड इफेक्ट मेडुलरी कार्सिनोमा थायराइड इसका भी है, वो तो उसका भी पैंक्रियाटाइटिस उसके लिए भी मुझे विजिलेंट दे अगेन मैं बताता हूँ मेडुलरी थायराइड कार्सिनोमा इज नॉट अ साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। वो हुआ क्यों है बिकॉज जो रोडेंट्स में स्टडी देखी गई थी ना, they had done this study on rodents and they saw an increase in medullary thyroid carcinoma in rats, but जब वो सेम स्टडी स्पीशीज चेंज करके मंकीज में देखी गई थी तो नहीं देखी गई थी। The GLP-1 receptor are more prevalent in rodents and GLP-1 के अंदर की calcitonin is more in rodents as compared to monkeys, so monkeys में नहीं देखी गई थी। monkeys और humans का species similar है, so humans में भी अभी तक reported नहीं है, but because rodents में देखा गया था, that is why it is a black box warning. If there is a family history of medullary thyroid carcinoma, MEN syndrome, then there is a chance that you have to be cautious and that is you should not start this drug because rats में देखी should avoiding men to basic. हाँ, men 2A or even men 1 you should avoid in those patients or you have to be more cautious. Men 2A में तो avoid ही करना है, but again it is not direct complication. Rodents में देखा गया था 3 प्लेट लेकर देखिए अपने के लिए एक दीपक ले, एक आईमन्नू के लिए, ठीक है, और एक अरीना के लिए, और एक ले लिया उसके लिए अनुपमा के लिए। सुनील नहीं, सुनील का छोड़ना, सुनील को हम नीचे एडजस्ट कर देंगे, तो अपने के लिए 6 ले ले। Obesity के लिए you could say that tirzepatide is better, but when it comes to cardiovascular disease, trials are much more in favor of semaglutide. Whether you see the SUSTAIN 6 trial, उनका surpass CVOT trial was non-inferior to dulaglutide. The surpass CVOT trial था, that was non-inferior to dulaglutide. It did not show superiority. Diabetes control almost same. So glycemic control इसमें भी अच्छा है, उसमें भी अच्छा है, but when you think in terms of atherosclerotic cardiovascular disease, semaglutide, STEER trials, SCORE trial, real world evidences, सारे डेटा इसके फेवर में। इनफैक्ट सिलेक्ट ट्रायल तो इवन नॉन डायबिटिक में देखा गया। सो सिलेक्ट ट्रायल जैसा उनके पास कोई ट्रायल नहीं है, दे आर डूइंग अ ट्रायल, दे आर डूइंग अ सरवाउंड एमएमओ ट्रायल, मोर्टेलिटी ट्रायल देखने के लिए, बट दैट हैज नॉट येट बीन पब्लिश्ड। इसका सिलेक्ट ट्रायल हैज बीन देयर सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम व्हिच हैज बीन शोन इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, रिडक्शन इन कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स इवन इन ओबेसिटी पेशेंट विदाउट डायबिटीज हु हैव कार्डियोवास्कुलर डिजीज। सो दिस इज वन ट्रायल, सिलेक्ट ट्रायल, जो इनके पास है, जो उनके पास नहीं है। So that is one important. Secondly, Essence trial. Essence trial में के वजह से it has been approved for MASLD. They are also doing a trial that is known as Synergy NASH trial. But उसके results अभी तक आए नहीं हैं. That is why that has not yet been approved for patients with MASLD. This has been approved for MASLD. There are only 2 treatments which have been approved for MASLD. One is resmetirom, one is semaglutide. Can we use this in biswas?